टीसीएस है, ये लोग क्या करते हैं, उनके पेरोल के ऊपर डायरेक्टली हायर नहीं करते, आपको डायरेक्टली उनके पेरोल पे नहीं लेंगे। पेरोल मीन्स क्या, उनके डायरेक्टली टीसीएस है, टीसीएस आप जब आपको हायर करेगी तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर हायर करेगी, थर्ड पार्टी कंपनी का पेरोल आपको देगी। थर्ड पार्टी मीन्स कौन सी, जो मैंने आपको पेरोल कंपनी दी है, जैसे केरोटाइप, देव विकास, टेक्ट्रीगॉन, टेक्नोलाइट, ये जो कंपनी है ये पेरोल कंपनी है आपकी। ओके, क्योंकि ये बड़ी बड़ी आईटी कंपनी क्या करती है, स्मॉल कंपनी के साथ टाइप करती है। ओके, और उनके पेरोल पे आपको हायर करती है, क्योंकि स्मॉल कंपनी का पे स्केल क्या होता है, कम होता है। ओके, और बहुत सारी फैसिलिटी भी आपको कम होती है पेरोल कंपनी की स्टार्टिंग में। जब आपको 1 साल 2 साल 3 साल जब वो कंपनी में हो जाता है, तब बड़ी कंपनी क्या करती है, आपको उनके ऑन रोल पे आपको ये करती है, ऑन रोल के ऊपर शिफ्ट करती है। ओके, जब आप ऑन रोल पे शिफ्ट होते हो तो उस टाइम पे आपका पैकेज, आपको फैसिलिटी, ये जो है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा जो है मिल जाती है। ओके, तो फिर हम लोगों ने भी क्या किया है, मैंने कुछ पेरोल कंपनी और क्लाइंट कंपनी के साथ टाई अप किया है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको आपके रिज्यूम के अंदर, ठीक है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा और आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो उस टाइम पे आपको एचआर पूछेगा कि आप कौन से कंपनी में काम करते हो। ओके, तो आपको उस टाइम पे क्या करना है, पेरोल कंपनी का नाम बताना है कि मैं देविका सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ, बट मैं ये कंपनी का पेरोल मेरा है, बट मेरे क्लाइंट कंपनी जो है, मैंने क्लाइंट कंपनी का लिस्ट दिया है, उसमें से कोई भी एक क्लाइंट कंपनी आप फाइनल कर लो और उनको बोलो कि मैं, मेरी क्लाइंट कंपनी ये है, मैं ये क्लाइंट के लिए काम करता हूँ। ओके, मेरा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस जो है वो सारा पेरोल कंपनी करेगी, बट मैं काम जो है ये क्लाइंट कंपनी के लिए काम करता हूँ, क्योंकि मैंने जो लिस्ट दी आपको क्लाइंट कंपनी की, वो सारी बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज है। ओके, तो रिज्यूम के अंदर वो कैसे मेंशन करना है, क्या करना है, आपको सागर सर है, सागर सर पूरा गाइड करने वाले हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, मैंने ग्रुप में से जो पेरोल और क्लाइंट कंपनी दी उसमें से एक एक नाम फाइनल कर लो, और वो नाम का आपको क्या करना है, ग्रुप के अंदर ही रिप्लाई दे देना है। ग्रुप के अंदर दे दो, या तो पर्सनली मैं बाद में फिर से आपका एक सेशन लेने वाला हूँ। ठीक है, जब आपका रिज्यूम बन जाएगा ना, या तो डायरेक्टली आप क्या करो, क्लाइंट कंपनी का नाम डायरेक्टली रिज्यूम में मेंशन कर दो। रिज्यूम के अंदर आपको क्या करना है, आपका क्लाइंट कंपनी जो आप फाइनल करोगे ना, वो डायरेक्ट मेंशन करो। कैसे करना है, आपको सैंपल रिज्यूम्स भी मैंने शेयर किए ग्रुप में, और सर आपको गाइड्स करेंगे रिज्यूम रिलेटेड। ओके, अपना आज का सेशन जो है वो रिज्यूम रिलेटेड है, कि रिज्यूम में क्या क्या चीजें मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होगा तो आपका रिज्यूम देख के ही आपको एचआर पूछने वाला है, रिज्यूम के अलावा आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। जो जो आप रिज्यूम के अंदर मेंशन करोगे वही आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, ठीक है गाइस, सागर सर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, थैंक्स प्रकाश। हेलो, हाय एवरीवन। हेलो सर। Hello, sir. Okay, so I'm just hoping you already completed all training sessions properly and you have performed the practical. Okay, and you get a good knowledge about technical, I'm saying. Okay, so now we'll move towards the resume part. Okay, so before that, just now that Prakash explained you, okay, related to the payroll company, right? So I just giving you one kind of review. So basically, just assume that there is a one company whose name is Sparsh, okay, Sparsh IT Solution. तो ये जो कंपनी है जो आपको पेमेंट दे रही है, आपको पेमेंट ये कंपनी से आ रहा है, एंड स्पर्श आईटी सॉल्यूशन का जो क्लाइंट है वो आप कंसिडर करो आईबीएम। ठीक है, तो आपने जॉइंट स्पर्श आईटी सॉल्यूशन किया है जो आपका पेमेंट दे रहा है, और आप जो वर्क कर रहे हो वो आईबीएम कंपनी के लिए कर रहे हो। ठीक है, मतलब उनका क्लाइंट है जो जिसका प्रोजेक्ट आईबीएम के ऊपर साथ आप काम कर रहे हो, एंड स्पर्श आईटी सॉल्यूशन आपको मंथ होने के बाद में पेमेंट दे रही है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड पेरोल कंपनी। ठीक है, और ये हो गया क्लाइंट कंपनी। अंडरस्टूड, क्लियर है सबको? Yes. Yes. Yes, yes. Okay, so once Yes, you sir. complete 1 or 2 years, okay, so might possible that IBM feels ki your performance is very good, okay, and if they required
to on their role. Okay, so they will just do some we can say legal activities, and they will take you on the IBM payroll. Okay, then we say payroll change. Okay, change payroll or something like that. Okay, so that will be happen after some time if your performance is very good. Okay, so that is a we can say the background which I want to just explain you. So just assume that payroll company, so where whatever the company's name which Prakash will provide you, those all are payroll companies. Okay, and you are working on those this client company. Correct? Is it clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. For Yes, sir. information. Now let me talk about the resume. Okay, so I'm just giving you some overview. Okay, so I have to just note down few points which is very important while you are talking about the resume. Okay, so let me I just given one sample resume. Okay, so if you've seen, there is a three things at the top: email ID, very important, right? Then mobile number. So if possible, give one at least two mobile number. Okay, so if this case your number is not reachable, so we don't want to lose any opportunity, or I would say not a single opportunity. Okay, guys. So make sure you already have the maintain the two mobile number. Okay, and आपका जो format है वो near about 80 to 90% same होना चाहिए. Okay, then also you have to provide the LinkedIn. So may I know like how many now those candidate those already have a LinkedIn profile, or any one of you who don't have? Having, sir. Okay, so like Facebook, but Facebook is a very so we can say general public social platform. Okay, but LinkedIn is related to the career platform. So guys, make sure you already have a LinkedIn profile. Okay, and in LinkedIn profile जो भी आप mention कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया पेरोल कंपनी, तो उसका नाम वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए. तो उसका LinkedIn का प्रोफाइल आप क्रिएट कर लो. अगर आपके पास नहीं है तो you have to add those name and all. Okay, so that should be well we can say available on LinkedIn. So अगर आपका LinkedIn पे कोई प्रोफाइल सर्च करता है तो वहां पे वो होना चाहिए. और जो भी कंपनी का नाम दिस इज नाउ in this resume you can consider this is a Sama technology. Okay, so this is basically the payroll company. Okay, so you have to mention that this company name and the date of joining and all that things that you can do in LinkedIn. तो इट इज समवट लाइक एन फेसबुक. अगर आप सबका फेसबुक अकाउंट है तो आई होप सो लिंक्डइन पे आप इजीली हैंडल कर सकते हो. ओके, सो गाइज मेक श्योर यू हैव टू क्रिएटेड वन लिंक्डइन अकाउंट. Okay, then whatever the objective is not that much important. Okay, so basically already I already taken near about 100 plus experience. I have a 10 plus years experience in IT industry. Okay, so guys, these are the few we can say the thing which is very important while you are preparing the resume. So you can mention very we can say common thing, common line in an objective that doesn't matter. Okay, so now work experience. If you've seen about the work experience, so whatever the payroll company which you mentioned, provide the date of joining and mention that present. Overall experience you have to show 2 years. Okay, if you are comfortable with the manual plus automation, then provide 2 years. If you are not comfortable with the automation right now, you can just mention manual and 1 year experience. Is that clear? Okay, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, Yes. because if you are working 2 years only for a manual, that is not a good we can see the presentation. Okay, so it's better you can show 1 year or 2 years. It's up to you, because 1 year के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे अगर आप मेंशन करते हो 1 year. अगर आप 2 years पूछ डालते हो तो अकॉर्डिंगली दे विल आस्क यू द क्वेश्चंस, राइट? नेक्स्ट. So as I just explained you, 1 year of experience in a manual testing and 1 month of hands-on experience in automation. She mentioned like that. Okay, you also tell them in this way. No issue. Hands-on experience is very important. Hands-on it means you already know how it works, how to tackle the situation. Okay, so this will explain you hands-on experience. The knowledge is a two different things. Knowledge and the
वी कैन से दी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिखाना है। यू ऑलरेडी हैड दिस वी कैन से दी session, right, for automation testing. So how to mention the experience in the automation as well as the manual experience, at least 1 year you have to display or we can present on a resume. So this is about the work experience and the company details. Okay. Then what exactly you know about the automation testing? Okay. You have to mention the Selenium because we focus on Selenium. Otherwise, interviewer will ask you the another we can say tools which we are using for automation testing. Let him focus on a Selenium. That's why if you seen that is in a bold and in caps letter format. Okay. So please mention that in your resume whenever you work on a resume part. Then what are the things which you learned in into the automation testing? So these are the key skills. इसको हम लोग बोलते हैं टेक की स्किल्स कि एग्जैक्टली आपने ऑटोमेशन में क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या आपको पता है, वो हाईलाइटेड होना चाहिए। तो दीज आर द कीवर्ड्स। सो इससे क्या होगा, आपको क्या करना है जब आप प्रिपरेशन करोगे टेक्निकली, यू हैव टू फोकस ऑन दिस कीवर्ड्स। ओके। अगर आप ये इसके रिलेटेड जो भी आपके इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, आप प्रिपेयर करके रखो। तो ये रिज्यूमे इस वे से बनाया हुआ है कि जब भी इंटरव्यूअर देखेगा तो टेस्ट एन जी, ओके, सो ही विल आस्क यू व्हाट इज द टेस्ट एन जी, ओके, व्हाट इज द एपीआई टेस्टिंग, हाउ यू डिड दैट। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो आपको रिज्यूम से देख के वो पूछेगा। ठीक है। सो मेक श्योर दिस ऑल योर कंसेप्ट आर क्लियर व्हेन यू आर टॉकिंग इन अ इंटरव्यू। Okay, so please prepare accordingly whatever key we can say key or tech skills we are using here. Okay, you should have a knowledge of it. ऑटोमेशन आपको फर्स्ट लिखना है, उसके बाद में सेकेंडरी आपको मैनुअल लिखना है, क्योंकि मैनुअल से ज्यादा अभी ट्रेंड है ऑटोमेशन का। बट ऑब्वियस वी नीड अ गुड प्रैक्टिस एंड आई होप सो आपने सबने वो किया होगा। ओके, सो दिस इज अ मेजर थिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग यू हैव टू मेंशन। अगर आपको नहीं दिखाना है तो यू हैव टू जस्ट डिस्प्ले द मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में आपने क्या क्या किया है, सेवेरिटी, प्रायोरिटी, बग्स, व्हाट इज एचटीएलसी, एचडीएलसी, ये आपको पता होना चाहिए। So we are just highlighted those we can say keywords, okay, while preparing for the interview. Okay, so make sure you already prepared those all keywords properly. Then Java, but obvious when we are saying the automation, आपको Java mention करना जरूरी है। You should definitely have some knowledge of Java programming, right? So why should we are not represent on a resume, right? Because resume आपका सब कुछ बताएगा आपके बारे में, right? करेक्ट। सो वी नीड टू मेक श्योर जावा के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत उसमें ऐड करना है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग, व्हाट इज द ओप्स कांसेप्ट, यू हैव टू क्लियर अबाउट व्हाट इज द इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, इनकैप्सुलेशन, मेथडोलॉजी क्या होता है। सो आपको ये प्रिपेयर करना है और ये आपको मेंशन करना है रिज्यूमे में। सो बट ऑब्वियस एज आई सेड अर्लियर, जो भी आपका इंटरव्यू लेगा वो फोकस करेगा दिस कीवर्ड्स एंड ही विल आस्क यू द क्वेश्चन रिलेटेड दैट। Okay, and if you're able to answer, definitely you got selected. Okay, so but it should be in good confidence level when you're talking with an interviewer. Okay, so don't worry, we'll take the mock interviews. Okay, so but make sure you are prepared for that, and before that your resume should ready. So Sir, you are not audible, sir. whatever, and accordingly you have to prepare. Okay, the reason behind that, आप सभी लोग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ कभी ना कभी आपने खरीदी कुछ की होगी, राइट? यू बाइट सम प्रोडक्ट्स ऑन ऑनलाइन लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन और लैपलैप, व्हाट आर द अदर साइट्स, करेक्ट? सो यू नो बेटर फ्लो ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज डील्स, राइट? ई कॉमर्स में आपका एड टू कार्ट, सो दीज आर द कॉमन फिनोमिना, राइट, जो आपको पता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर फाइनेंस लिखूंगा कुछ तो और आपको बोलूंगा डेब्ट, क्रेडिट, पेमेंट इन, पेमेंट आउट, सो ये सब आपके दिमाग से ऊपर से जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी चूज अ प्रॉपर project type that is we can say very common to understand and easy to understand, right? So that's why you have to mention the e-commerce. Okay, e-commerce, then you can explain it very easily. Okay, we already have a NGK Farrier Supply site, you can just go through it.
And the technology I have to mention, but obvious Java and Selenium. Selenium is for automation, and Java is but obvious required for the automation, right? So that you have to mention. The testing approach is automation. If you don't want to go with the automation, then maintain the manual. Okay. So what exactly the activities you perform? So make sure you gone through the all activities we mention here, responsibility. Okay, and you are aware about it. अगर आप में इसमें कुछ किसी में एक में भी आपको कुछ डाउट है, तो आप ट्रेनर को पूछ सकते हो कि ये पॉइंट आपको नहीं समझा, ये क्या है एग्जैक्टली. ओके, so that is a one thing which you need to mention here. So responsibility. Okay, and then qualification. That is not a good thing to show qualification before the external, because this is a major thing, key skills which is required. Okay, so you can mention education details later on. Then the software skill, what are the softwares which you already have an idea, so you maintain those all softwares. Okay, and I hope so those we already know about those all softwares. If anyone you don't know, so you can just remove it. If you want some idea, so you can definitely ask trainer, he will just give you some background, so you can just mention in the resume. So skills are very important. So these are the software skills, and whatever we explained earlier, those are the technical skills. Okay, so which we just highlighted at the top. Then the personal qualities is, that's fine. One more thing, the address, it should be from Mumbai or Pune or some metro city. Don't put your village address. Okay, so like you interview will be comfortable that whenever you are in metro city, it means you will join as soon as possible. Okay, so you don't need sometimes they feel like that, so it's better you can just mention some care of or some tenant address, but it should be in metro city, Pune, or in Mumbai, or somewhere else in a metro city only. Okay, so just take care of this one point and note down it, and the rest of the details is fine. Okay, so guys, that's it. Any doubt you have till now in the resume part, or any question? Hello. No, sir. So जो मेजर है मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, होप सो आपने नोट डाउन किया होगा. मेक श्योर यू ऑलरेडी हैव लिंक्डइन प्रोफाइल. लिंक्डइन में आपका प्रोफाइल है, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लो, और उसमें ये डिटेल्स भी मैच होना चाहिए. जो भी आप एक्सपीरियंस प्रेजेंट कर रहे हो वो आपका लिंक्डइन में होना चाहिए. You have to mention the start date, this one, whichever you mentioned in the resume. Minimum try at least you have a 2 mobile number which you display. Okay, then this whatever the key skill which we are represent, you should have idea. You just prepared accordingly while you are going through the technical interviews. Okay, then project will remain same as it is. मेक श्योर करो कि ये जो रिस्पॉन्स रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके बारे में आपको पता है, और व्हाट एग्जैक्टली रिटर्न अकॉर्डिंगली वी टेक अ सेशंस. ओके, then you have to mention the qualification. The top one should be at the first. It means the whatever the graduation, then 12th, and then 10th. If there is a diploma, so mention accordingly. These are the software skills जो आपको पता होना चाहिए, and accordingly your resume will get shortlisted. ओके, ये जो की स्किल्स है ये वो इंपॉर्टेंट है. जब भी वो सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड से ही सर्च करेंगे, राइट? सो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, एंड एड्रेस शुड बी फ्रॉम मेट्रो सिटी. ओके, so that is a, we can say 10%. We can, when we are preparing for a technical interview, then you will ask me what is the 90% which is required while you are preparing interview. So I would say there is only one thing, confidence. Okay, आपके पास सब कुछ है और आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, then nothing will happen with you. Okay, so guys, make sure boost your profile and boost your confidence level and prepare for an interview. इंटरव्यू आप देते हो तो उसमें दो ही we can say output आएंगे, right? Once you give an interview, क्या होगा? Anyone, any guesses? What are the two possibilities? एक तो सिलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए सर. Exactly, right? So nothing, anything will happen, right? वो आपको हैंग नहीं करेंगे, वो आपसे किसके कैसे आपको ढकेल नहीं देंगे. सो उसके बारे में सोचना ही नहीं है. एक तो आप सिलेक्ट हो गए या रिजेक्ट हो गए, ठीक है? इन दोनों में से एक ही कुछ तो होने वाला है. तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस आप रखो कि आपको जो आता है उनके सामने जितना आता है उतना आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? अगर एक कोई की स्किल के बारे में आपको क्वेश्चन पूछता है और आपको पता है, तो स्टॉप मत हो जाओ 2 मिनट बोल के, कंटिन्यू चालू रखो.
आपको उसका सिर्फ टाइम है ना, टाइम कंज्यूम करना है, क्योंकि इंटरव्यू आधे घंटे या आधे घंटे से इंटरव्यू नहीं रहेगा। अगर आपने 2 मिनट में खत्म होगा तो उसके बाद में उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रेडी रहेगा। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। समझ रहे हो ना? आपको सिर्फ उसका टाइम कंज्यूम करना है, आंसर देके रुकना नहीं है। जब वो बोलेगा रुकना तभी रुको। जो आपको टॉपिक अच्छे से पता है, अच्छे से उसको और चीजें उसको बारे में बताते जाओ, ठीक है? अगर वो आपको हो गया, आप प्रैक्टिकली थोड़ा उसको बताओगे हम लोग ने ऐसा किया वैसे किया, टेल शो हिम कि आपने टेक्निकली ऐसा प्रैक्टिकली कर चुके हो। जितना हो सके उसका टाइम उतना कंज्यूम करो कि उसको कम से कम क्वेश्चन पूछने का टाइम मिलेगा। अगर आपने एक एक 2-2 मिनट में क्वेश्चन आंसर्स खत्म किए, ठीक है, तो आपको आधे घंटे में शायद से वो 10 से 12 क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने थोड़ा टाइम लिया, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, तो आपको 5 या 6 क्वेश्चन में ही वो क्लोज कर देगा। ठीक है गाइस? सो दिस इज अ वेरी वी कैन से स्मॉल टिप्स बट इफेक्टिव टिप्स वी कैन से, करेक्ट? Yes, sir. या सो ये सब आपको ध्यान में रखना है। सो दैट्स इट, एंड नाउ यू जस्ट प्रिपेयर दी रिज्यूमे, और फिर से हम लोग एक बार उसको रिव्यू करेंगे। ओके, एंड इफ देयर इज एनी करेक्शन सो विल डू अकॉर्डिंगली। Okay, so I hope so Prakash already shared you this sample CV. Accordingly you have to prepare, and technically also have to prepare with all the, we can say, the tech skill which we are showing in a resume. So that's it from mine. So any questions anyone have? Hello? No sir. No, no, sir. Okay, so I'm expecting you are preparing the resume and you created the LinkedIn profile. Is it correct? So in next 1 week, you are ready with the all, we can say, technically sound with the all interview questions and along with the LinkedIn profile and the resume. So we'll review, we'll take a mock test, we'll take mock interviews, and you will be ready for the interviews, okay, with the confidence. Sir, in the resume, we don't have to mention the client name, Don't have to mention? client name, client company name. Don't do that, okay? You have to just make it orally. Okay. And आपको in the orally LinkedIn, interview में बताना है. Sorry? in the LinkedIn. No. You have to just give this the company name. That's it. Or whatever you mentioned in your resume. Payroll company. Oh, Okay. okay. Client company should be only orally when you're talking, discussing with the HR, or we can say interview panel. Okay. That's it. Okay. Okay. Don't think more about that. हमारा जो background यही कि आपको just clear होना चाहिए कि what exactly payroll and what exactly the client. That's it. Okay. You just concentrate on that. Is that fine? Yeah. Anything else? Any questions? Anyone have? Hello? No, team? no, sir. Okay. So please just give you 100% and give some efforts and be ready with your profiles. Okay. And once it is done, just update on our chat. Okay. Okay, sir. Okay. Thank you. गाइज, Thanks. Yeah. या थैंक यू सागर सर। गाइज, अगर किसी को कुछ रिज्यूम रिलेटेड डाउट्स होगा, कुछ क्वेश्चन होगा, तो आप पूछ सकते हो। ओके, अभी आपको क्या करना है, ग्रुप में मैंने सैंपल रिज्यूम्स दिए आपको, वो देखना है, वो रिव्यू करना है, और एज इट इज आपने आपके रिज्यूम्स बना के ना, आपके रिज्यूम्स बना के सेंड करने हैं ग्रुप के अंदर। ओके, वो आपका 1 बाय 1 एक एक रिज्यूम्स हम लोग, आप भी आपका स्टडी करके फिर आपके रिज्यूम में क्या करेक्शन करने चाहिए, क्या चेंजेस चाहिए, वो मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप आपका रिज्यूम्स बना के ग्रुप के अंदर शेयर करो। ओके, और Okay, sir. दूसरी चीज ये कि आपका अगर प्रिपरेशन हो गया होगा मैनुअल प्लस ऑटोमेशन का, जिस जिस गाइस का प्रिपरेशन हो गया होगा, उन अगर मॉक इंटरव्यूज के लिए आप रेडी हो गए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, या आप बताओ कि हम लोग रेडी है मॉक इंटरव्यूज के लिए। बट ऐसे बीच में नहीं बताना है एक दो, हम लोग एक ही दिन में हम लोग 3-4 बंदों का एक साथ हम लोग मॉक इंटरव्यूज लेंगे। आधा आधा घंटे का मॉक इंटरव्यूज रहेगा। मॉक इंटरव्यूज लेते वक्त आपको प्रोफेशनली वीडियो ऑन करना है। ओके, आपका नेट प्रॉपर चाहिए, वीडियो ऑन रहेगा, और आप फॉर्मल ड्रेस में आप इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे। और आपको है ना, आपका स्क्रीन मोबाइल से आपको कनेक्ट नहीं करना है, लैपटॉप से ही कनेक्ट करना है। मॉक इंटरव्यूज देते हो, लाइव डायरेक्टली इंटरव्यूज देते हो, आपको किस तरीके से इंटरव्यू रहेगा वही आपका पूरा मॉक इंटरव्यूज के अंदर रहेगा।
ओके, तो आपका जब प्रिपरेशन हो जाएगा आप मुझे बताओ कब आप रेडी हो, मैं उसके हिसाब से आपका मॉक इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करता हूँ। मॉक इंटरव्यूज लेने के लिए जो है, फर्स्ट मॉक इंटरव्यूज आपका अपने जो ट्रेनर है गणेश सर जो ट्रेनर है वो आपका लेंगे। ओके, और सेकेंड मॉक इंटरव्यूज आपका कुछ जो हमारे जो बंदे काम कर रहे हैं जिनका 3 या 4 साल का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है सेम फील्ड में, वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। ओके, वो आपका इंटरव्यूज लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आप प्रिपरेशन करो। अगर कुछ डाउट्स है, अभी अमोल सर के बैच के भी कुछ बंदे यहाँ पे हैं, जैसे कि सोनाली पल्लवी वगैरह, इनको कुछ डाउट था, उनका कुछ 2-3 सेशन नहीं समझे थे, आदर्श आदर्श को भी नहीं समझा है प्रोजेक्ट रिलेटेड। तो आपका प्रोजेक्ट एक्सप्लेनेशन का सेशन मैंने फिर से अरेंज किया है। ओके, तो आपको ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा, आज इवनिंग तक आपको अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग दिस सेशन। ओके, और एक और ग्रुप में मैंने एक चीज मेंशन की थी ग्रुप में, ओके, कि बहुत सारे बंदों का कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट? गणेश सर ने भी मुझे इन्फॉर्म किया था कि बहुत सारे बंदों का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो स्पोकन वाली एक टीचर है उनके साथ टाइप किया है। ओके, और उनका सेशन मैंने ऑर्गेनाइज किया है आपके लिए। ओके, अगर आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में इंक्वायरी करते हो, तो सेम चीज पढ़ाने का आपको 4-5 हजार रुपए चार्ज नॉर्मली किया जाता है। बट मैंने उनको डिजिटल पार्टनर्स कुछ अमाउंट उनको स्पॉन्सर करने वाला है, और कुछ अमाउंट आपको देनी, मैंने मेंशन किया था, बस 1000 रुपीज में आपको 20 दिन का सेशन रहेगा। उसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इंटरव्यू पर्सनल राउंड्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उसका आंसर कैसे देना है। ओके, कम्युनिकेशन रिलेटेड क्या करना चाहिए, ग्रामर्स कैसे यूज करना चाहिए, कुछ बेसिक बेसिक जो टिप्स है वो टिप्स कम्युनिकेशन रिलेटेड आपको वहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। डेली इवनिंग में 8 से 9 का सेशन रहेगा आपका। ओके, 8 से 9 का सेशन जो है डेली रहेगा आपका 20 दिन के लिए। मैंने सिलेबस क्या क्या रहेगा वो सिलेबस भी आपको मेंशन किया है। ओके, तो जो जो गाइज उसके लिए इंटरेस्टेड होंगे वो आपको रिप्लाई दे देना है कि जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे 15 या 20 बंदे हो गए तो हम लोग क्या करने वाले, ट्यूसडे या वेनसडे से वो सेशन स्टार्ट हो जाएंगे आपके। ओके, क्लियर हुआ गाइज? और कुछ डाउट है किसी को? ओके सर। ठीक है, तो No, sir. वैकेंसीज है, फटाफट रिज्यूम्स बनाओ, सेंड करो, प्रिपरेशन करो, और फटाफट रिप्लाई दो मुझे। ओके, ओके सर। ओके गाइस, तो स्टार्ट कर दो काम, और ग्रुप के अंदर सेंड करो आपके रिज्यूम्स वगैरह, बाकी चीजें जो जो मैंने बताई है। ओके, ओके सर। ओके सर। यस यस यस। सर मैनुअल टेस्टिंग का कोई सैंपल है क्या सर, रिज्यूम का मैनुअल टेस्टिंग मैनुअल का भी सैंपल है। जैसे हाँ अभी आपने मैंने आपको भेजा है ना रिज्यूम एक, हाँ उसमें हाँ जो मैनुअल का लिखा हुआ है उसमें से आप ऑटोमेशन हटा दो, पूरा मैनुअल का डाल दो। वहाँ पे जैसे आपको 1 साल 2 साल का जितना दिखाना है वो आप वहाँ पे क्या करो, मेंशन कर दो। ओके, और उतना मैनुअल का ही चीजें आप मेंशन करो। ठीक है, बट आपको ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ एक थिंग, मैनुअल के लिए वैकेंसीज मार्केट में बहुत कम है। आप मैनुअल दिमाग से निकाल दो, दोनों ही ऑटोमेशन मैनुअल दोनों का ही प्रिपरेशन करो। अगर मार्केट में 100 वैकेंसी रहेगी ना टेस्टर के लिए, तो वहां पे सिर्फ 5 वैकेंसी आपको मैनुअल की रहेंगी, 95 वैकेंसीज आपको मैनुअल प्लस ऑटोमेशन की रहेगी, राइट? क्योंकि मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल में बहुत सारे मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। हम लोगों का काम क्या है, टेस्टर का काम क्या है, बग्स निकालना, बग्स फाइंड आउट करना, जो प्रॉब्लम्स होगी सॉफ्टवेयर के अंदर वो निकालना हमारा काम है। और हम लोग को अगर मैनुअल वे से करेंगे तो उसमें और मिस्टेक होने वाली है, क्योंकि मैनुअल में हम लोग मैनुअली वर्क करते हैं ना, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत सारे होते हैं। तो करके कंपनी मैनुअल वर्क जो है बहुत कम करती है। ओके, बट अगर आपको लग रहा होगा कि मैनुअल के ऊपर करना है तो नो प्रॉब्लम, आप मैनुअल के ऊपर भी रिज्यूम बना लो, अपलोड करते हैं। देखो 15-20 दिन तक आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है क्या, आपको इंटरव्यू कॉल्स आते हैं क्या, फिर हम लोग आप चेंज कर सकते हो। ठीक है सर। ओके, और ठीक है, मैनुअल के ऊपर से कुछ याद आया था मुझे। ठीक है, और आपको जिनको जिनको कितने इयर्स का एक्सपीरियंस दिखाना है, ओके, आप वो भी मुझे क्या करो, आपका पासिंग ईयर, अभी सबका तो था मेरे पास डिटेल, बट फिर से एक बार है ना,
आप सबका पासिंग ईयर और कितने साल का आपको दिखाना है, 1 साल 2 साल 3 साल का कितना दिखाना है, वो भी आप मुझे सेंड कर दो। मैं उसके अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग सीटीसी, करंट सीटीसी क्या रहेगा, वो सारी चीजें आपकी रिपोर्ट में मेंटेन करके आपको ये सेंड करता हूँ। ओके, ठीक है। ओके सर। Okay, sir. ओके गाइस, किसी को और कुछ डाउट है, क्वेश्चन है? नो सर। ओके, तो चलेगा, हम लोग रुकते हैं आज यहाँ पे फिर, और आप ग्रुप में फटाफट रिप्लाई करो। ओके ओके, बाय। Yes, sir.